हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम Redmi 9 प्राइम और Realme C3 के बीच में 1 घंटा फ्री फायर प्ले करेंगे अल्ट्रा पे शैडो ऑन करके और साथ में हाई FPS भी ऑन करके। तो गाइस ये वीडियो देखते रहिए लास्ट तक और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों फ़ोन्स। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले टाइम देख सकते हैं 9:07 हो रहा है। और सिंपली मैं सेटिंग में चलकर आपको बैटरी परसेंटेज भी दोनों की दिखा दूँ। तो दोस्त यहाँ पे चलते हैं हम बैटरी वाले सेक्शन में। किधर है भाई? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Redmi 9 प्राइम 70 पे है फ़िलहाल और Realme C3 देखेंगे 85 पे है। तो दोस्त अब सिंपली चलते हैं हम फ्री फायर में। ओके, तो यहाँ से चलकर हम फ्री फायर को ओपन कर दिए और सिंपली Realme C3 में भी ओपन कर देते हैं। अब दोस्त यहाँ पे ग्राफिक में चलते हैं और सभी सेटिंग्स देख सकते हैं कि ऑलरेडी Redmi 9 प्राइम में हाई पे है सभी कुछ। और यहाँ पे अब सेंसिटिविटी भी आप देख सकते हैं। और सिंपली Realme C3 में भी चलते हैं और यहाँ के ग्राफिक को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अल्ट्रा पे। तो गई सभी सेटिंग्स यहाँ पे भी हमने हाई कर दिया दोस्त। अब सिंपली गई इस गेम को स्टार्ट कर देते हैं। आप गेम का मज़ा लीजिए और देखते रहिए लास्ट तक। First blood. Triple kill. First blood. Kill. Double kill. Triple kill. First blood.
Double kill. डाउन भइला ना हमरा एक ऊपर एक Kill. मार मार jangan dia jangan lela voy la Double kill. Triple kill. Double kill. Kill. Three kill. तो दोस्त यहाँ पे हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं। और सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं Realme C3 64 पे है और Redmi 9 Prime देखेंगे 47 पे है। तो गाइस यहाँ पे 23% Redmi 9 Prime में डिक्रीज हुआ और 21% Realme C3, बिकॉज Realme C3 में HD+ है, इसके वजह से थोड़ा कम डिक्रीज हुआ। बट दोनों ही फ़ोन अच्छे परफॉर्म किए और टाइम भी देख सकते हैं 10:07 हो चुका है। तो गाइस काफ़ी अच्छा दोनों ही परफॉर्मेंस यहाँ पे मिला दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं मिली। बट Realme C3 को एक टाइम मैंने देखा, मतलब दूसरे गेम प्ले जब कर रहा था तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया था, फिर से मतलब चालू करना पड़ा फ्री फायर को। तो ये एक इशू देखने को मिला। और साउंड रिकॉर्डिंग में भी Realme C3 में इशू है, मतलब साउंड लेट से आता है रिकॉर्डिंग करते समय। पहले फायर हो जाता है उसके बाद साउंड आता है, तो ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। बट ऐसे अच्छा परफॉर्म करता है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्त।